Hey guys, so today we'll be focusing on the question called lead code 1239. I'm not going to read this title, I'll tell you that. So we are given an array of strings and we need to say that key string is formed by concatenation of a subsequence of array that has unique characters, right? So I'll go over and discuss the example to you. कभी कभार लगता है कि एग्जाम्पल से ही पूरा क्वेश्चन तो मैं बता दूंगा क्या है एंड वही होना चाहिए. So we are given an array and we are given some, this array contains some unique strings, right? Not unique strings, but it contains some strings. And the length of this array is 60, the max length. जब भी मेरे को ऐसे problems मिलते हैं, the very first thing I do is that I read the constraint over here, right? That's the four most important things which I want to do. And the next thing over here is that कि एक array जिसमें max to max कितने elements होते हैं, ये चीज हमेशा अपने दिमाग में बांध लेना. The max element, right? ये नहीं कि max element क्या है, constant क्या है, वो तुम्हें याद रखना. Max element will be 16 and each element का length क्या हो सकता है, 1 से लेके 26. ठीक है? The array of I, its length can vary between 1 to 26. Okay, as simple as that. So हमें क्या बोलना है कि now what you have to do is that you have to concatenate, or so there can be maximum 16 elements. So you have to concatenate. These are strings of this part, of this array. So you have to concatenate and form the largest unique string which you can do. So one example is that you can combine un and iq. Funny joke आ गया, ठीक है पर un and iq can be compared and the string length will be, what will be the string length over here? Because देखो सारे elements यहाँ पे क्या है, यूनिक है. सारे कैरेक्टर्स मतलब ये यूनिक है, आई यूनिक है, क्यू यूनिक है, तो क्या हो गया इसका आंसर 4. ठीक है, इसका आंसर 4 हो गया. कैन वी डू एनी अदर कॉम्बिनेशन? कैन वी डू एनी अदर कॉम्बिनेशन? आई क्यू एंड यूई को कंबाइन कर सकता है डेफिनेटली, बट अगेन इफ यू इवन कंबाइन देम द स्ट्रिंग आंसर विल बी व्हाट, विल बी 4, राइट? सो यहाँ पे दिया हुआ रहेगा कि आंसर 4 है out of all them. ठीक है, now let's take this for a given example so that it's very clear to us. ठीक है, now in this one what will happen is that, what do you think? तुम ही बताओ. This I feel कि तुम पता है क्या कंबाइन कर सकते. I'm just telling me, I have not, this CAHA can be combined and this R can be combined and this ERS can be combined. So effectively कितना हो गया, 4 + 3 7. ठीक है, अरे भाई भाई गलत हो गया क्या? अरे हाँ, आर रिपीट हो गया ना इधर, देखा, इसलिए मैं एग्जाम्पल नहीं देखता. So yeah guys, just take care of that. Do not be me. Just take care. हाँ, कैसे बना भाई वो लार्जेस्ट वाला? हाँ. So we could form from that ERS. Let's not include R. So CHA is one given thing and ERS is one given thing. Just ensure कि there are all unique elements over here. Problem with that, if we include this R is already part of this one and that's why we blunder. Right? So I hope example wise it's very clear. And the thing is that कि I'm going to present with you a very unique approach. I'm going to tell you something तुमने सोचा भी नहीं रहेगा. मतलब मैं बता रहा हूँ कि usually in all of my videos I would say कि take a pause over here. Oh, okay, I can do this. So the hint is bit. The hint is bit. And if you want, you can pause over here. And I will tell you why. I will tell you why also. ठीक है? So you can, if you have resumed, I can start from this point, right? So एक चीज पहली चीज सोचते हैं, what can be the maximum length? What can be the maximum length? The maximum length, भाई तुम ही सोचो, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स है, मतलब लाइक इंग्लिश डिक्शनरी में कितने हैं, मतलब ए से लेके जी तक ही है, मतलब 26 लेटर ही होंगे. तो मैक्सिमम तुम्हें पता है कि मैक्सिमम लेंथ कितना आएगा, 26 आएगा. ठीक है, तो द थिंग इज दैट कि ये चीज मेरे को क्लियर कट दिख रही है ना यार, कि अगर मेरा वैल्यू 26 आ गया तो सॉर्टेड है मेरा लाइफ. ठीक है, मेरा लाइफ सॉर्टेड है. I can just return that. At any point I find any substring which forms 26, I can just pause over here, right? But let's say that कि we want to iterate over the all and we want to find that, right? How do we do that? So एक चीज समझो कि एक एलिमेंट ऑफ द एरे उठा रहा हूं मैं, एक एलिमेंट ऑफ द एरे उठा रहा हूं ए बी सी करके. ठीक है, नाउ इट लुक्स यूनिक टू मी, बट हो सकता है कि देयर वुड बी सम नॉन यूनिक वन एज वेल, लाइक सी सी बी करके भी कुछ दूसरा एलिमेंट होगा. Do you think this CCB should participate in our algorithm? No, it should not participate. Why it should participate? Because if we try to, देखो खुद ही दुगला है, दूसरे को भी फिर खुद ही डुप्लीकेट है, इस डुप्लीकेट को कहीं भी इंक्लूड करेंगे मतलब नहीं है. So that's why we included.
exclude it, sorry. So let's try to erase it, and let's say कि अब ABC में हम लोग को clear हो गया. Now what we are eventually going to do, let's say that we have finally decided that we have building something, right? We have certain element E F G H I. तो एक चीज बताओ, इंग्लिश अल्फाबेट में जीरो से लेके ए को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, उसको जीरो से रिप्रेजेंट कर सकता है. जी को रिप्रेजेंट करना है, किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 25 से. तो एक बात बताओ, इफ इफ मेरे को ये इंग्लिश, ये एक सिंगल कैरेक्टर के लिए, एक सिंगल कैरेक्टर के लिए कितने बिट्स चाहिए प्रेजेंट करने के लिए? तुम ही सोचो 25 बिट तो ये दे रहा, तो ऑब्वियसली अपने पास 25 बिट, अपने आवर कंप्यूटर डज नॉट गिव अस 25 बिट, राइट? सो वी नीड टू राउंड इट ऑफ एंड यूज 32 बिट. Now try to understand this, guys. मेरे को ना, it took me some time to realize on the solution, right? I had spent lot of time just to come on the solution, so that you guys have to do minimal effort, ठीक है? अब मेरी बात समझो, ठीक है? If I'm guaranteeing all the elements, all the characters are unique over here, that means कि मेरा जो number create होगा, that is in 32-bit number, it can be something like this, right? It can be something like this. जहां पे जीरो बिट क्या इंडिकेट करेगा, जीरो बिट क्या इंडिकेट करेगा कि मेरा ए सेट है कि नहीं. फर्स्ट बिट क्या इंडिकेट करेगा कि मेरा बी सेट है कि नहीं, है ना? साइमल्टेनियसली वी कैन डू दैट, राइट? So we can simultaneously do that, and what we need to eventually do is that, sorry, I had to sneeze. So once we have decided that, अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है, मेरी बात सुनो, ठीक है? Initially, let's say कि initially we push all the unique in a we start with element A, ABC. Let's say that we start with the element ABC, ठीक है? I keep a DP, I keep a DP, ठीक है? DP में सिर्फ DP भी नहीं मत बोलो, इसको DP भी मत बोलो, एक आंसर बोलो, ठीक है? इनिशियली जीरो है, तो ये क्या करेगा, पहले इससे चेक करेगा कि क्या मेरे आंसर सबसेट में कुछ है कि नहीं, ठीक है? ये एबीसी के फॉर्म में नहीं होगा, ये किसके फॉर्म में होगा? 111, ये नंबर होगा अपना भाई, ये नंबर होगा. एंड मजे की बात ये सुनो, ठीक है? मजे की बात ये सुनो, इफ इफ आई हैव टू कंबाइन टू, जैसे कि मेरे को एबीसी और ईएफजी कंबाइन करना है, ठीक है? तो एबीसी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं? ऐसे जीरो, ठीक है, 111, ठीक है? ईएफजी एच आई को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? ठीक है, अरे यार इसको थोड़ा ज्यादा कर दिया, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, डी पे जीरो, फिर उसके बाद वन 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 वन, ठीक है? अभी थोड़ा अलाइन कर देता हूँ इसको ऊपर नीचे. एंड अगर मैं इसका एंड लू, अगर ये दोनों यूनिक है, मान के चलो कि इफ दे आर एट अ डिफरेंट प्लेस एंड इफ बोथ आर यूनिक, व्हाट विल बी द एंड ऑफ दिस थिंग? जीरो 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 जीरो. Tell me, guys. Tell me, guys. This is the most beautiful observation which you have ever seen. Most beautiful, dude. मतलब मेरा दिमाग, आई एम टेलिंग यू, मेरा दिमाग उड़ गया कि भाई जब मैंने सोचा ना ये, मैं बोला यार भाई, आई हैव वेंट टू द फोर्थ डायमेंशन एंड थॉट अबाउट दिस थिंग. सो दैट्स द ब्यूटी. एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग. मान लो कि इसमें ए होता, ठीक है? इसमें ए होता, तो इसका एंड लेते तो क्या आता? इसका एंड लेते तो आता वन, है ना? If we had taken this and we could have gotten one, and we could know that ki we cannot club A and E F G H I. ठीक है? That way we can clearly say that just solely based on the thing bit thing. This is why I'm a firmware engineer, guys, so I play with bits a lot. मतलब मेरा पूरा लाइफ उस पर लग रहा है कि चला गया. बट दैट्स वाई इट्स फन समटाइम्स टू कंबाइन दैट आइडिया. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि हम एबीसी लेंगे, हम उसको एक आंसर में जीरो रखेंगे, ठीक है? एक जीरो मान के चलेंगे, क्योंकि इनिशियली हर एक कैरेक्टर एबीसी ई एफ जी है, चाहे ये खुद का भी तो मैक्सिमम लेंथ हो सकता है, ये खुद का भी तो मैक्सिमम लेंथ हो सकता है, तो इसलिए जीरो रखेंगे, क्योंकि जीरो से हम लोग एंड करेंगे. इफ यू एंड विद जीरोस ओवर हियर, what we would eventually get? Zero. So that means ABC is a proper representation over here, right? And that's why we written ABC. We will update our answer with containing ABC. Now let's say that now the answer contains ABC. Let's say we have another element EFGHI, and let's say that we want to combine this EFGHI with ABC. What we will do is that we will again do this and with this ABC, right? And we will see कि एक unique element create हो रहा है कि नहीं. If yes, we will then push this new unique inside this
given answer. And note guys, these are bit representation, right? I'm just writing it for you, but for your clarity purpose in just writing this A B. But eventually ये जो elements होंगे ना, ये actually कुछ number होंगे. ये इसका number क्या हो जाएगा? 0 1 2 sorry 1 2 and 4. इसका number हो जाएगा 4 plus 2 7. ठीक है? तो इसका भी कुछ number आ जाएगा ऐसे. ठीक है? Now we will get different numbers. Do not return the decimal. That's a very bad thing to do. That's a very bad thing to do. हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक total max रखना पड़ेगा आंसर. I'll come to that. Now what can happen is that I will have ZFG. ठीक है, ZFG. So ZFG अब क्या करेगा? पहले इसके साथ ABC के साथ कंबाइन करेगा, फिर ABC EFGHI के साथ कंबाइन करेगा, and after that it will push that again, right? And we will keep pushing in this answer. We will just keep pushing in the answer because any future elements can come over here and it can combine, right? And also guys, I think so I missed one thing. ठीक है, I missed one thing over here. I forgot. मैंने तुम्हें बोला था ना जीरो से भी होगा, जीरो तो लिखा था भाई, इसको कंबाइन नहीं करवा, तो जीरो से भी कंबाइन होगा ये, एंड दिस विल आल्सो कंबाइन विद जीरो, सो दैट ZFG will also come into the picture. EFGHI will also come to the picture, and any further elements will even combine with this. And trust me out, guys. Trust me out, guys. This approach works over here. Why? Because the number of elements are pretty less. This is why I started the video with saying that कि array का जो length है ना 16 है, ठीक है? तो इवेंचुअली क्या ही एलिमेंट्स है भाई, O of n स्क्वायर नहीं है ये, O of n का अप्रोच है ये, एंड दिस इज सच अ ब्यूटी अप्रोच कि आई डोंट नो गाइस, आई हैव, देखो मैं एक चीज बताऊं, ली ने भी नहीं सोचा भाई ऐसा, ली अगर सोच लिया रहता ना ऐसा, तो आई डोंट नो, देयर आर सम पीपल हु हैव थॉट बिट मास्किंग बट नॉट टू दिस लेवल, नॉट टू दिस लेवल. बिट मास्किंग विद बैक ट्रैकिंग, हट यार, बिट मास्किंग विद बैक ट्रैकिंग थोड़ी कर रहा हूं मैं, आई एम डूइंग, सी. So lot of confusing approaches, right? Lot of confusing approaches. And what my solution is now, guys, I'll tell you, it's crazy. I'll even write it for you guys because I know people do not trust people who do not code. I code. So initially हम क्या करेंगे, इसको zero से initialize कर देंगे. Then I'm going to create a bit mask. हर एक पहले एक काम करता है, int I is equal to 0 से लेके array dot size पे जाएंगे, ठीक है? And guys, I might need to refer some of them. So I mean, at this point, if you want, you can just stay over here and see how I code, because actually abhi maine just I think so I attempted this 3 or 4 days back, or maybe yesterday only, I don't remember. I have a very bad memory, I'll tell you guys. And the only way I avoid that thing is that I try explaining a very intuitive. My whole thing is that I spend my entire energy on deriving a very unique solution. So मेरे पास बाकी time बचता ही नहीं है. So we need to generate a bit mask character. ठीक है, bit mask character. So let's say कि bit mask character 0 है फिलहाल के लिए, ठीक है? For this given character, what we will do is that we need to check, first of all, we need to check for this given character and we need to set it accordingly. So we will have let's say that कि int value, मैं कब से क्या लिख रहा हूँ भाई, ch minus a कर दो इसको, ठीक है? अभी हमारे पास 0 1 2 0 से लेकर 25 तक वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है? Now what we have to do is that कि according to that 0 1 or something, we have to set those bit accordingly, right? We have to set those bit accordingly. So अभी क्या करना है कि before setting it, we have to check if the bit mask, मतलब कि हो सकता है ना कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी हो जाए, तो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हम कैसे चेक कर रहे हैं? अभी तुम लोग मुझे बोलोगे भाई तुमने फिर से ये किया, मैं बोला भाई शांत रहो, तुम लोग बात समझो मेरी थोड़ी. तो देखो अभी बिट, अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू आया, ठीक है, मेरा यहाँ पे कुछ वैल्यू आया, जैसे कि यहाँ पे रिटर्न किया 0, ठीक है? मान लो कि मैंने पिछले अटेम्प्ट में ए को सेट किया था, अभी फिर से मैं ए को सेट कर रहा हूँ. डू यू थिंक वी शुड कंटिन्यू ऑन दिस, वी शुड कंटिन्यू इटरेटिंग ऑन दिस कैरेक्टर, और वी शुड क्विट हियर? We should quit, guys, remember that. Why? Because it does not make sense over here. So agar if I take the bit mask, right, if I take the bit mask where I'm storing all that kahani maine jo main pakai hai, and if I right shift by this thing and I take the and I say that ki if it is equal to 1, and I take the and say that ki if it is equal to 1, what might happen is that ki this is this is a duplicate thing. So we have to do is that continue. We do not have to do anything to this. We just have to say कि continue कर रहा हूँ. नहीं तो we have to set. We have to do a set operation. Guys, I'm not sure कि मैं कोड जो लिख रहा हूँ ना,
सो जस्ट थिंक कि मैंने थोड़ा बहुत सोचा एंड क्लब कर दिया, बट इफ आई एम एबल टू कोड दिस थिंग, मे बी आई एम अ प्योर जीनियस, which is less likely, but I'm a genius because I thought of the solution. Let me tell you that. अभी क्या करना है, बेट मास्क कैरेक्टर पे वैल्यू स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको राइट शिफ्ट करेंगे और कर देंगे। तो अगर इसका वैल्यू जीरो है तो ये इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, वन पे ही रहेगा और फिर हम इस पे स्टोर कर देंगे, ठीक है। नाउ वी हैव सक्सेसफुली generated the bit mask. We have successfully generated the bit mask, right? Now this bit mask needs to be compared. We need to iterate over all the elements at the DP. We need to iterate over the elements of DP and store the max count, right? तो हमें क्या रिटर्न करना था, max. Let's not forget our objective. Int max length बोल दो, इसको बोल दो zero, ठीक है। Now here also what we need to do, we need to return max length. मैं हमेशा ऐसे कर देता हूँ कि जब भी when I declare a variable I just always return it so that I later path का काम नहीं करने का, भाई path का काम बहुत बेकार होता है। So thing is that ki why I have commented continue, guys, it's crazy. So anyways, if this is continue, ठीक है, तो let's go ahead and say कि let's store in this one. So basically the thing is that ना, मैं एक तुम्हें ट्रिकी चीज बताता हूँ। अभी इसमें क्या करोगे ना कि अगर तुम पुश भी कर रहे हो, अगर तुम इटरेट भी कर रहे हो तो गलत हो जाओगे। सो लेट्स से कि if I were to talk this like ABC, right, and this is my initial zero, I compare with zero and then I push ABC, right? Now what will happen is that if I compare with the DP only now, I will be doomed because I will again compare ABC with ABC and then I will again push something, or I know I will not push something, but what might happen is that let's say that I push ABC, let's say that I have another element EFG, okay, and EFG makes sense with this one, makes sense with this one, and it will end up pushing EFG and EFG GABC. So these are the different possibility which can end up happening, right? And again, EFG will end up comparing with itself because we are iterating based on the I is equal to zero till dp dot size, और ये dp dot size ना बढ़ता जाएगा, ये dp dot size बढ़ता जाएगा। So either you handle this carefully or you can create another array which is as per your convenience. Anything is fine. You can create another vector array because what happens, क्या ही है भाई, array dot length 16 है, मैं तो भाई पूरा ही यूज करूंगा उसको। Anyways, I hope this part was clear. So let's say that ki we have successfully created the bit mask. We have successfully created a bit mask, and let's say ki we continued from this point and we will exit out of here, right? So that means कि ये loop से break होंगे, but बाहर वाले loop को क्या पता कि हम कहाँ से break हुए हैं। तो हाँ, we need some kind of indication ना। If bit mask character is equal to zero, तो यहाँ से भी continue कर दो ना भाई तुम, यहाँ पे क्यों, यहाँ से भी कंटिन्यू करता हूँ। एंड otherwise what we do is that we create a store and we are going to iterate over this original dp dot size। यार एक एक फंक्शन था, मैं वो भूल गया, मैं बता रहा हूँ मैं क्या बात कर रहा था। सो नाउ द थिंग इज दैट कि एवरीथिंग इज इन इंटीजर ओवर हियर, ठीक है, एवरीथिंग इज इन ओवर इंटीजर एंड बिट मास्क इज आल्सो इन इंटीजर, राइट? सो व्हाट वी हैव टू इवेंचुअली डू इज दैट द बिट मास्क character of and of dp of y should be equal to 0. So what we do is that if that is true, then we need to push back, we need to push back, right? And after pushing it back, I'm just thinking what to bit mask, we need to store the और now first of this, हाँ और इस तो स्टोर करेंगे क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं। एंड आफ्टर दिस ना, आफ्टर दिस what I can eventually do, what I can, okay, this is just iterating on the dp dot size and then we are pushing on that one. You can do two operations over here, but okay, let's not complicate it. Let's not use a store one. I mean, it's fine. What I can do ना guys, if dp size को मैं पहले डिक्लेयर कर लेता हूँ तो इससे दिक्कत पड़ेगी नहीं मेरे को। dp dot size लिख देता हूँ इसको। That's why I said कि लाइव कोडिंग का अलग ही फन है, मतलब तुम्हारे साथ बैठ के मैं रीजनिंग कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। आई नो लोग पता नहीं करते हैं कि नहीं है, but it's pretty much fun. I enjoy it. So let's say that we directly push in the DP. Now we need to update the length.
सो गाइस मैं बिट काउंटिंग का भूल गया हूँ भाई। एक बिल्ट इन फंक्शन था, आई मीन खुद की लिख सकता हूँ बट वो बात नहीं है। खुद लिखूँ कि काउंट करूँ? पॉप बुलेटिन करके था भाई कुछ तो ऐसा। देखो मेरे पास बिट काउंटिंग मैं भूल गया। अगर देखो मैं ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक्चुअली भूल गया हूँ, मेरे को दूसरे तरीके याद है। डोंट थिंक दैट कि दिस गाय इज द डम गाय। डीप बिट मास्क, ये भी बहुत अच्छा अप्रोच है। बिट मास्क इज इक्वल टू बिट मास्क कैरेक्टर डीपी ऑफ आई एंड इसको लिख देंगे काउंट प्लस प्लस एंड इसमें क्या करना है अपने को? हाँ ये क्या कर रहा था? बिट मास इज इक्वल टू एंड ऑफ, इसको क्या देंगे? बिट मास एंड ऑफ बिट मास -1। ठीक है, और हर पॉइंट पे हम काउंट इंक्रीमेंट कर देंगे। दूसरे भी अप्रोचेस है, आई विल शो यू। इफ दिस डज नॉट वर्क ना, व्हाट आई विल डू इज दैट कि काउंट को ना जीरो सेट कर देना हमेशा। यूज करने से पहले हमेशा जीरो सेट कर देना और इंक्रीमेंट कर देना। एंड आफ्टर दिस थिंग, आफ्टर दिस while loop ना, what we can eventually do is कि we can update a max length. Max length will be max of max length and what? Count. हाँ अब लग रहा है कि कुछ चलेगा, है ना? एवरी टाइम आई कैलकुलेट द डीपी साइज और डायरेक्ट डीपी में डाल दो। इतना, अबे यार क्या गंदा इंसान हो, इसको ऊपर कर दो ना भाई। इतना गंदा इंसान हो, इधर डाल दो। और क्यों इतनी मेहनत करनी है लाइफ में भाई? क्यों लाइफ में इतनी मेहनत करनी है? मजे की बात तब आती जब मैं इसको इधर लिख देता। दो, आई टेल यू वन फनी थिंग। व्हाट विल बी द आउटपुट? व्हाट विल बी द आउटपुट if I take this code and write it over here? So at this point bitmask 0 हो जाता है and I will end up pushing bitmask 0. So just a funny thing. I mean, it's not necessarily do that, but it's just a funny thing. So yeah, I think so. Let's see. I hope so मेरा कोड चल जाएगा। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, इसलिए मैं ताकि अपना खुद से ही क्लियर हो जाऊँ। मैं तुम्हारा बताने का मतलब है कि मैं खुद को बता रहा हूँ। सो आई विल स्टार्ट विद आई इज इक्वल टू 0, आई विल इटरेट टिल एंड आई विल generate a bitmask for each given character over here, right? Array of characters in the string format, so that's why I'm using a character iterator. Now after iterating, I'll just calculate the value at this point. And I will use this bitmask, right shift with the value, and then check if and of one is equal to one or not. Because eventually what I'm checking over here is that key if this value at this given index val is set, and if it is 0 and 1, मतलब कि the value is not set, I will get 0 over here and we would have set it accordingly. Otherwise we would have just exited out of here, right? So okay guys, I think so I missed one thing. What would happen कि ना हमारा bitmask necessarily 0 नहीं होगा. The thing is that ना कि even though let's say कि B C D and again D आ गया, ठीक है? I'll tell you this thing. Even in this scenario, we would have encountered another D over here, and our bit mask will contain this B C D bits set, and this bit mask will not be 0. So we needed some kind of flag, bool flag. So इस bool flag को हमेशा false कर देना एंट्री से पहले। यहाँ पे flag को true कर दो, and यहाँ पे this is a more better. This is why I don't like using variables to see. So basically, at this point, I will break if there is a I have to put it first here. And if this at this point if the flag is, I will set the flag as true and then I will continue. So as soon as I detect a duplicate, I will just exit out of here, and I have to even exit out of here as well, because there is no point of storing this duplicate or processing this duplicate. And after that, what I will do is that after that I will take the dp.size, which is eventually initialized to 0, and then I will start iterating from 0 to I to whole dp.size with incrementing I value. Then I will check the bitmask character which I have generated from this point, and I will do an AND with dp of I. If this is 0, that means this is a new given character which I have eventually found, and then I will push back. Again, I will take the OR because now we need to generate a new bit. Then I will push it back to the dp. Then I will check कि इसका लेंथ क्या है, ठीक है? लेंथ कैसे पता चल रहा है? काउंट से, ठीक है? And after that, I'll just gonna
This is just a Brian Kurgan method, something like that. I'm not even sure the name. So it's that method which just counts the number of bits, and after that I'll just set the max length accordingly at every given point, and after that at this point I'll just return it. Let's see if the code runs or not, dude. I'm not even sure. I'm not even sure if the code will run. It's very rare. It's very rare that my code will run in the first loop. So it says कि यहाँ पे कोई error है. यहाँ पे क्या error है भाई तेरा? Okay. आई थिंक सो ना यहाँ पे प्रेसिडेंस का मैंने ध्यान नहीं दिया सो बिट मास्किंग में ऑलवेज टेक केयर ऑफ द प्रेसिडेंस आई विल स्टार्ट इंक्लूडिंग लॉट ऑफ ब्रैकेट्स लेट्स सी precedence matters guys precedence actually matter it might look like ki I feel like now sometimes people should show the errors which they are encountering because that tells us ki actually bhai these are actual kind of errors which we encounter over here what it says ki be yaar so I don't know people who write the code they just oh my god it's not working okay okay it's not working let me figure out why it's able to detect for this thing but not for the remaining thing so I'll do one thing bit counting function C++. I totally forgot guys that's what I said कि हाँ देखो ये build pop in था ना ये build pop in है so let's try to I mean देखो यार मैंने वो वाला अप्रोच यूज किया था कागन वाला क्या आ गया ब्रायन कागन वाला and end of I so I think so this is correct only if if n is not equal to 0 हाँ क्योंकि initially start करेंगे 10 से 10 is not equal to 0 this will loop will continue and at each point I'm just taking the and of n minus 1 and incrementing the count so this is not definitely not the given issue so what can be the given issue so even this is correct कि अगर मेरे को यहाँ पे duplicate मिल गया so I will just exit out of here setting the flag is true and then I have to see that key your flag is true and then I will just continue from this point also because it does not make any sense to iterate over the bit mask. Okay. Otherwise ना इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी मतलब I was just thinking कि what if I could write it at part of this only this for loop के part में ही नहीं but this for loop के part में लिख के मतलब ये ना so yeah this is fine and after that I will take this dp.size then compare it over here let me ask gpt dude should I ask gpt I'm not sure because gpt might do something to my code which I don't like and इस दोनों का ऐड करेंगे तो ऐड आना चाहिए 0 because I do not want it to be something let's ask chat gpt not sure कि क्या गलती की मैंने this is what live coding is I know what is my mistake you could okay attenuated oh भाई छी भाई क्या गंदा इंसान हो क्या ही गंदा इंसान हो भाई क्या ही गंदा इंसान हो लगता है भाई दिल पे लगता है आह! ऐसी गलतियां होती है भाई क्या so this is why I was not very reluctant to use that ठीक है मेरी गलती मिल गई I'm sorry dude if there was an interview he would have helped me he or she would have helped me but anyways I hope you understood the solution and it's the actually best possible solution and I'm very open to my mistake guys I mean no one writes a perfect code on the first go like mistakes होते हैं and I just wanted to show you what was the mistake again मैंने काउंट को यहाँ पे कंसिडर किया था बट उसको फाइनली जीरो नहीं किया मैंने मतलब यहाँ पे मेरी गलती हो गई इधर से ठीक है यहाँ पे एक बार गलती हो गई क्योंकि ये हर बार क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है मैं यहाँ पे तो जीरो कर दिया उसको पर मैंने इधर काउंट करने के बाद जीरो नहीं किया दैट इज अ मिस्टेक so yeah that's all I hope you enjoyed the video and this is the best possible solution out there on the internet right and I can even make it very interesting right let me I mean even if you're staying at this point it's fine too let me see if we can even do something fancy return max क्योंकि max तो 26 ही हो सकता है ना भाई let me see कि अब कुछ अभी 100% से 101% जाएगा कि नहीं आई एम थिंकिंग कि मेरा मेमोरी ज्यादा बच जाएगा
एग्जैक्टली मेरा मेमोरी ज्यादा बच गया, क्योंकि 3% भी अच्छा है, क्योंकि आई एम डूइंग एन अर्ली डिटेक्शन, राइट? आई एम डूइंग एन अर्ली डिटेक्शन. इफ max length is anyways equal to 26, then we can just exit out of here. So yeah, thank you guys, hope you enjoy the video. See you again.